Hello friends, welcome back to my YouTube channel for the set of examples. In this video, we have brought you examples of narration. As you can see, first slide is showing that only. So before starting, I want to read one quote as I mentioned on first slide. Knowledge is of no value unless you put it into practice. ओके ये जो आज का वीडियो है ये उस पर ही बेस्ड है. इट मीन्स अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन आप उस चीज़ को कहीं इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं दैन इट वॉन्ट बी एनी ऑफ यूज़. ओके सो अगर आपके पास नॉलेज है, आपने बेसिक फंडा पढ़ा है, तो उसको प्रैक्टिस करके उसको और स्ट्रॉन्ग करना है. सो let us do it. Let us see examples as we have seen all the basic fundamental of narration, but the most important thing is that practice. How much the more you will practice, the more you will be good in any field. Okay, so let us start the illustration. So I have brought you 5 paragraphs in which I have solved three paragraphs. ओके और मैं बता दूं जिन्होंने प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखे हैं, लाइक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बेसिक फंडामेंटल ऑफ नरेशन एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, they will not understand even a single line, even a single word in this video. तो अगर आप ये वीडियो ने गलती से डायरेक्ट आपने ऑन कर लिया है तो प्लीज़ गो बैक टू माय पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बेसिक फंडामेंटल ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, and I'm going to soon I'm going to make it a playlist of different topics, so you will get all together the things. Okay, so I'm starting. Question 1, you can see direct speech, employer and applicant. 2 लोगों की यहाँ पे discussions है. Employer, why did you leave your previous job? Applicant, employer पूछ रहा है applicant से कि आपने अपनी पुरानी जॉब क्यों छोड़ दी थी. Applicant, they didn't meet my requirement. मतलब इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो जॉब उसने छोड़ दी. इट मीन्स फॉर द बेटर प्रॉस्पेरिटी. ओके, एम्प्लॉय ने फिर से पूछा व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट हियर, मतलब आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो यहाँ पे. एप्लीकेंट, आई एम एक्सपेक्टिंग ₹10,000 पर मंथ. एप्लीकेंट ने बोला कि मैं यहाँ पर 10,000 एटलीस्ट पर मंथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. एम्प्लॉयर, वी कैन पे यू जस्ट ₹8,000 पर मंथ. उन्होंने बोला कि हम आपको 8,000 रुपीज़ दे सकते हैं. ओके गाइज, लेट मी टेल यू, दिस इज़ द वेरी बेसिक डायरेक्ट स्पीच. ओके, वेरी बेसिक डायरेक्ट स्पीच. ओके, इट हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक डायरेक्ट स्पीच. ओके, सो लेट अस चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयर और एप्लीकेंट के बीच डिस्कशन हो रहा है. पहला सेंटेंस आप देखिए, व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब. क्या बता रहा है, विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस. दिस इज WH इंटरोगेटिव सेंटेंस. जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है उसको ये समझ में आएगा. डोंट ओपन इट डायरेक्टली. इफ़ यू हैव ओपनड इट बाय मिस्टेक देन प्लीज़ गो बैक टू पार्ट 1 एंड पार्ट 2. otherwise there won't be any meaning to watch this video, please. So why did you leave your previous job? This is WH interrogative sentence. Okay, so WH interrogative sentence में हम क्या करते हैं, sad का ask लगाते हैं. Okay, so you have to understand this. Employer यहाँ पे पूछ ही रहा होगा, मतलब employer ने पूछा ही होगा यहाँ पे. तो first line will be, you can see indirect speech. Employer asked applicant. Employer ask applicant. Okay, now what you have to do, what rules we are changing here. It is again, why did you leave your previous job. आपको पहले ही बेसिक पता है कि WH फैमिली वर्ड में, WH इंट्रोगेटिव में कोई भी कंजक्शन नहीं आता, WH वर्ड ही कंजक्शन होता है. तो why will come as it is. और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो क्या हो जाता है, इट विल चेंज इनटू एफर्मेटिव. तो गिवन जो डिड है वो बदलेगा हैड में, सिंपल सी बात है, लेकिन वो एफर्मेटिव हो जाएगा. तो वाई ही हैड और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो लीव का लेफ्ट. वाई ही हैड लेफ्ट
योर यहाँ पे कौन है, एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट ही और शी दोनों हो सकता है। यहाँ पे ही काउंट किया गया है, आप शी काउंट करो नो मैटर, बट सी काउंट करोगे तो हर आता, हमने ही काउंट किया तो हीज आया है। लेफ्ट हिज प्रीवियस जॉब, इट इज़ फाइन, फर्स्ट सेंटेंस इज डन। अब एप्लीकेंट क्या करेगा, रिप्लाई करेगा, रिप्लाई में आंसर देगा, तो एप्लीकेंट आंसवर्ड, एप्लीकेंट आंसवर्ड। अब दे डिड नॉट मीट माई रिक्वायरमेंट। आप यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आपको लिखना है एप्लीकेंट आंसवर्ड एम्प्लॉयर तो भी चलेगा। यहाँ दो लोग का डायलॉग है, मतलब एप्लीकेंट ने एम्प्लॉयर को ही आंसर दिया है। तो एप्लीकेंट आंसवर्ड, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, दैट कंजक्शन आ जाएगा, दैट दे डिड नॉट मीट माई रिक्वायरमेंट। तो दैट दे का एज इट इज दे, बट डिड नॉट चेंज होता है हैड प्लस नॉट में, हैड प्लस नॉट प्लस V3 में। ओके, सो दे हैड नॉट, मीट का मैट, माय यहाँ कौन है, एप्लीकेंट, एप्लीकेंट यहाँ ही लिया है, ही का क्या जाएगा, हीज, तो हैड नॉट मैट हीज रिक्वायरमेंट। ओके, सेकेंड लाइन इज डन। एम्प्लॉयर ने फिर से पूछा, ठीक है, पिछली जॉब के बारे में कुछ पूछा, वो एम्प्लॉयर इंक्वायर्ड, यहाँ पे आप और भी आस्क्ड भी पूछ सकते हो, मैंने इंक्वायर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। एम्प्लॉयर इंक्वायर्ड व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट हियर, ठीक है, तो पूछा कि व्हाट सैलरी, ठीक है, तो WH है, इंट्रोगेटिव है, मतलब WH ही कंजक्शन आएगा, सैलरी। अब आपको यहाँ पे डू यू एक्सपेक्ट हियर, ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, डू डज होता है तो सिंपल पास्ट मतलब V2 हो जाता है। ये बेसिक फंडा जो इन द स्टार्टिंग वीडियो इन पार्ट 1 आई हैव explained you properly. Please watch those video if you want understand any of the things. Okay, so what salary he expected there, here का हो जाता है there. Okay, now fourth line, applicant I am expecting rupees 10,000 per month. एप्लीकेंट ने रिप्लाई किया एम्प्लॉयर को, एप्लीकेंट रिप्लाइड एम्प्लॉयर, सिंपल सेंटेंस है, कंजक्शन दैट आ जाएगा, आई एम इज एम आर का हो जाता है वॉज वेयर, आई यहाँ पे कौन है, एप्लीकेंट है, मैंने ही लिया है तो यहाँ पे ही आएगा, दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग रुपीज 10,000 पर मंथ। ओके, नाउ लेट अस कम टू द लास्ट लाइन, एम्प्लॉयर वी कैन पे यू जस्ट रुपीज 8,000 पर मंथ। अब देखो, एवरी टाइम इफ यू सी यू कैन ऐड सम एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल, impactive, affective, affectionate words to create some beauty in your indirect speech. Fine. So as I have mentioned, you can see ये लास्ट लाइन जो concluded मैंने लिखा है, the employer concluded by saying that। अब आप बोलो यार ये तो कोई फंडा है नहीं, कोई रूल्स है नहीं ऐसा, तो आप रूल्स के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो। एम्प्लॉयर रिप्लाइड या टोल्ड वट एवर यू फील कन्वीनियंट यू कैन go through no matter, but for the sake of the beauty of the indirect speech I have written the employer concluded by saying that। ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस है तो कंजक्शन दैट आ जाएगा, we can pay you just rupees 8,000 per month। तो we means they, I have told you that what you have to write in place of we, so they or can का could and pay you, who is you, applicant is he, so it will come him here, so they could pay him just rupees 8,000 per month। So friends, this is our first question, direct speech, indirect speech. If you feel any problem, comment me, ask me. Okay, you can directly ask me. Okay, but before you face any problem, so go through the video part 1 and part 2 basic rules, and then after you come to me. Fine, so let's proceed to the next question. Question number 2, Daniel, Harriet, what are you doing at this hour in your farm? Harriet, I have applied for the Nobel Prize. Daniel, what has this to do with the prize? Harriet, the Nobel Prize is awarded to somebody outstanding in his field। मतलब दो लोगों का कन्वर्जेशन है, आइए हिंदी मीनिंग ना जानते हुए हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। ओके, सो यू कैन सी इट इज़ अ कन्वर्जेशन ऑफ टू पीपल। सो फर्स्ट सेंटेंस you can see it is an interrogative sentence. Okay, so but obvious the ask will come, Daniel asked Harriet, conjunction will be what, because given is a WH word sentences, so what, now are you, what is you is Harry,
you is Harriet. So and I have taken him as a male. So I have written he. This is am are, you can see are. So it will be was. Why? Because is am are changes into was where. Fine. So he was doing at का at हो जाएगा this का that. In the previous part 1 video I have told you why it is changing. So this is the basic fundas. This that our in your, who is your Harriet, and he is a male. Male means he means he is in the indirect speech in his farm. First line is done. ओके अब हैरियट ने आंसर दिया. हैरियट आंसर्ड डैनियल. And this is a simple sentence. Conjunction will be that I have applied. Who is I? I is Harriet. So it means he. And have have changes into had. He had, and had plus V3. He had applied for the Nobel Prize. Okay. तो क्या होगा सेकंड लाइन का. हैरियट answered Daniel that he had applied for the Nobel Prize. Third line, Daniel, what has this to do with the prize? ओके. डैनियल अगेन आस्क्ड, क्योंकि ये अगेन ही क्वेश्चन ही है, ठीक है, कि इस प्राइज के साथ क्या करते हैं. व्हाट हैज़ दिस टू डू विद द प्राइज. क्या प्राइज है ये, कैसा प्राइज है ये. डैनियल अगेन आस्क हैरियट. ये इंट्रोगेटिव है व्हाट. फिर दिस को आगे ले आएंगे जो दैट हो जाएगा, बिकॉज इंट्रोगेटिव एफर्मेटिव हो जाता है. दिस का हो जाएगा दैट, और हैज़ का होता है हैड. दैट हैड टू डू विद द प्राइज. ओके. डैनियल अगेन आस्क हैरियट व्हाट दैट had to do with the prize. Okay, last line, Harriet explained Daniel that. देखो ये लास्ट लाइन देखना ध्यान से. The Nobel Prize is awarded to somebody outstanding in his field. अगर आपको नोबल प्राइज के बारे में पता है, ठीक है, और मेरा अगर सेकंड पार्ट का वीडियो आपने देखा है, तो लास्ट में मैंने उसमें बताया यूनिवर्सल ट्रूथ. So this is a kind of universal truth sentence. The Nobel Prize is awarded to somebody outstanding in his field. ठीक है, नोबल प्राइज उसको दिया जाता है जो अपने फील्ड में आउटस्टैंडिंग होता है. ठीक है, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. अगर आप इसे यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कंसिडर करते हैं, देयर वोंट बी एनी ऑफेंस. यू कैन चेंज, यू कैन गो थ्रू द बेसिक चेंजेस. ओके, बट आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ. ओके. और यूनिवर्सल ट्रूथ का रूल्स क्या है, सिर्फ कंजक्शन दैट आता है एंड देयर वोंट बी एनी चेंज. तो हैरियट एक्सप्लेन डैनियल दैट द नोबल प्राइज इज अवॉर्डेड टू समबडी आउटस्टैंडिंग इन हिज फील्ड. फाइन. So this is the question number 2. Hope you are getting. Okay, so let us proceed for the question number 3. Question number 3. Mother, why are you late from school? Amit. Amit, while coming from school to bus stop, slipped by stepping on a banana peel. Fine. वो बनाने के छिलके के नीचे पैर से स्लिप हो गया. ठीक है. मदर, ओ माई सन, डिड यू हर्ट योर सेल्फ. क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है, तुमने अपने आप को कहीं चोट लगा लिया. अमित, आई गॉट अ बैड ब्रूज ऑन माई लेफ्ट नी. ब्रूज मतलब घाव, घाव से जो कट हो जाता है. ओके. इनडायरेक्ट स्पीच में देखते हैं तो पहला डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव है, सिंपल. मदर आस्क्ड ही सन. ओके, आस्क ही आएगा, और ही सन में लिखा तो आप सन भी लिख सकते हो, नो मैटर. मदर आस्क्ड सन, बट आई हैव एलोबरेटेड विथ ही सन बिकॉज उनका ही बेटा है. मदर आस्क्ड ही सन वाई. Who is you? You is Amit. Amit is a male name. तो why he? And is हमारे का was where होता है, तो he के साथ आता है was. He was late from school. Mother asked his son why he was late from school. Amit ने आंसर दिया अपनी मम्मी को. Amit replied his mom that while coming from school to bus stop. This is a simple sentence, कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, आप वैसे ही लिखोगे. While coming from school to bus stop. स्लिप्ड, ये स्लिप्ड V2 है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट बनता है पास्ट परफेक्ट. मतलब V2 हो अगर तो वो हैड प्लस V3 में कन्वर्ट होता है. तो आप इसको पूरा लिखोगे, ही हैड स्लिप्ड बाय स्टेपिंग ऑन अ बनाना पील. अंडरस्टूड. ओके. नाउ टू थर्ड लाइन, मदर, ओ माई सन, डिड यू हर्ट योर सेल्फ. दिस इज एग्जैक्टली एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. यू कैन सी देयर इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क. मैंने यहाँ पे एक ऐसी चीज़ लिखी जो मैंने आपको बताई ना हो शायद, लेकिन आप ये लिख सकते हो, या जो बताई है वो भी लिख सकते हो. मदर एक्सक्लेम्ड विथ वरी. मदर एक्सक्लेम्ड विथ वरी. ये डिड यू हर्ट योर सेल्फ, ये हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे इफ या वेदर कंजक्शन आता है. ऑलवेज रिमेंबर. ओके. मदर एक्सक्लेम्ड विथ वरी इफ ही, यू इज अमित, सो इफ ही
hurt himself. Yourself क्या हो जाएगा? Himself. Okay, understood? Okay. अमित लास्ट सेंटेंस. अमित बोलता है आई गॉट अ बैड ब्रूज ऑन माई लेफ्ट नी. अमित आंसर्ड विथ पेन. ऐसे चोट लगी तो पेन के साथ ही आंसर देगा. कॉमन सेंस है. अगर आप नहीं लिखोगे तो कोई मैटर नहीं है, बट आई हैव मेंशन. अमित आंसर्ड विथ पेन दैट he had. This is simple past tense. If you see in the question given is a simple past tense, so simple past change होता है past perfect means V2 change होता है had plus V3 में. So Amit answered with pain that he had got a bad bruise on his left knee. Fine. So दोस्तों, as I told you, knowledge is of no use until you will not practice. और until you will not put into a practice. नॉलेज जितना भी है उसका प्रैक्टिस नहीं होगा तो वो एक दिन क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्ट हो जाएगा एंड देयर वॉन्ट बी एनी मीनिंग. सो कीप प्रैक्टिसिंग, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. फाइंड मोर एग्जाम्पल्स ऑफ स्पीच. You have rules, you have basic fundas, everything is available in part 1 and part 2, and here at the last I have given you 3 examples explanation also. Okay, so please try to work hard, use your time. And here I have brought you some I have brought 2 examples for you, which is here. Atul, please give me a ticket for the ST bus station. Conductor, sorry, I can't. Atul, why so? Conductor, because his bus will go Kalupur only. Number 2, have you seen this film Jenny? Said Prakash. Then yes, twice, said Jenny. How is it? Very nice, go and watch it. This is the 2 paragraph which you have to solve by your own. Okay, do practice, work hard, try to attempt the paragraphs. If you won't understand, comment me on my channel. Okay, and stay at home and stay safe. Until then, Jai Hind, Jai Bharat.